किधर जा रहे अच्छा किधर कितना Yeah, hope my screen is visible with you, all of you. Okay. Uh, I hope all of you are from third year class, right? Abhishek. Yes, sir. Okay. So I think I supposed to tell you in detail. Yeah. Today, for the gate purpose, we will deal with the remaining part of the thermodynamics. That is particularly turbo machinery, refrigeration, gas power cycles as well as vapor power cycles. Let us start with this gas power cycle. Like it is example for this gas power cycle is nothing but your gas turbines, Uran gas turbine power plant. I mean the power production unit by making use of gas as a fuel, okay, natural gas or whatever it is. So this gas power cycle is operating on the basis of this Brayton cycle, and this is also called as a Joule cycle. So both this Brayton cycle or Joule cycle, they are relevant for producing the power by making use of gas as a fuel. So today we will deal with this Brayton cycle or the Joule cycle for the gas power cycles, and then later on we will go for this Rankine cycle. So probably in between this, Yadav madam is also going to deal 1 hour topic from 11 to 12. So gas power cycle, or which is also called as the Brayton or Joule cycle. So what are the major components of these gas turbine power plants? Majorly, this gas turbine power plant will consist of a compressor. I mean, the theme of this presentation will be, I'll give you some introduction part about this gas turbine power plant, that is Brayton cycle, its analysis, how to calculate the efficiency. Then what are the means of increasing the efficiency of this Brayton cycle or the Joule cycle for the gas turbine? Then what are the elements which are coming under this one? What are different classifications? Okay, and then what are the different terms which we will come across with this gas turbine, and then later on we will deal with some of the gate question paper problems, okay, for analysis and for understanding. So with this, so probably I'm planning to complete this within 1 hour, and then next other madam will deal, and then afterwards we will deal with Rankine cycle, that is steam power plant. Anyhow, Kolekar sir has told me like sir has dealt with Rankine cycle, but then I think he left with reheating regeneration part under the Rankine cycle, if I'm right. Okay. So let us have a look on this gas turbine power plant. The major components of this gas turbine power plants is majorly three. One is a compressor. The main function of this compressor is to increase the pressure of any working fluid. So here the working fluid will be the gas. I mean, generally air will be taken from the atmosphere and that will be compressed in a compressor. So by compression, its pressure is going to increase. So ultimately, we will understand that PV is equal to RT. As the pressure increases, temperature also increases. But increase in temperature is not much, but increase in pressure is very high.
So compressor is going to compress the air to very high pressure. So after that, air will be sent to the combustion chamber, wherein some amount of fuel will be added to it, and already oxidizer is air itself, so it is going to have a combustion in a combustion chamber. Okay, then now whatever the combustible gas of air and the fuel mixture, which we call it as, now we will call it as a gas now. So this gas which is coming out of a combustion chamber will be fed to the turbine for the purpose of doing the mechanical work. I mean, hope you are aware, we are converting available energy of a fuel into, probable heat energy, then thermal energy, then kinetic energy, then pressure energy, then mechanical energy, then we are getting a electrical energy at the end. So this is so conversion process of energy from one form to the other in case of a power production. So that's what, as we are dealing with so many conversion processes in between, so efficiency of these plants will be almost very less. I mean, around 26% minimum, and then maybe varying up to 40% with some uh, additional elements which will increase the efficiency. That also we will see. In between, if you come across with like I'm not clearly audible, or the screen is not shared with you properly, so you can just alert me. Okay. These major three components: compressor, it will take the air and increase the pressure. Then this high pressure air will be sent to the combustion chamber, where some amount of fuel will be added to it. Then this air and gas will be entering into the turbine, where it will do the work. Okay. So generally, these gas turbines can be operated by making use of liquid fuel or the gases. I mean, like oil, natural gas, even coal gas, producer gas, blast furnace, and sometimes by burning the pulverized coal. I mean, a powdered coal. So these are the fuels. Gaseous fuels, natural gas is an ideal fuel, but is not available everywhere that is to be manufactured. Then liquid fuels of the petroleum origin, particularly distillate oils or residual oil, and essential qualities of these fuels must be, they must be volatile, they must have less viscosity, and they must have adequate calorific value, and they should be free from the moisture and suspended impurities that would clog the small passages of a nozzle and damage the valves and plunger of a fuel pump. This is only information to you, okay, not for the part of gate. And then even pulverized coal, as I told you, will be used as a solid fuel. So major classification of gas turbine power plant is only two type. One is the open cycle gas turbine, and second one is the closed cycle gas turbine. Okay. So now I'll show you the diagram of open cycle gas turbine, and then we will deal what is this open cycle gas turbine. Now look here, this is called as an open cycle gas turbine, wherein we are taking the air from the atmosphere. Okay, so that air will be taken into the compressor, and then also generally we will write the schematic diagram of a compressor like this. With an on the left side we will be having a higher diameter, on the right side we will be having a lower diameter, and this will be decreasing in this way. Whereas turbine will be with lower diameter on the left hand side and higher diameter on the right hand side, and will be having a increasing diameter. So this air which is coming into the compressor will be compressed, and then this compressed air, high pressure air, will be sent to the combustion chamber here. So here some amount of natural gas, yeah, any type of a fuel, like as we discussed, it may be oil, it may be a gas, it may be a pulverized coal. Okay, so that can be sent over here. So now burning of this fuel takes place, and these combustible gases mix with the compressed air, and then totally what we call it as a gas which is coming out of this combustion chamber will be fed to the turbine. Okay, then it will do the mechanical work here, and then it is connected to the electrical part, so we are able to get the power generation. And then after doing the work in a turbine, this gas will be exhausted to the atmosphere. I mean, in simple way, in comparison with the amount of air what we are taking, and if you compare, like for example, generally all the thermodynamic cycles, what we are doing is we are analyzing for 1 kg of the mass. Like for example, if you are taking 1 kg of air from atmosphere,
So that air will be taken and will be doing work over here, and only some nominal amount of fuel will be added to it. Let us say 10 gram. So it is total now 1 kg air and 10 gram of a fuel, total together 1.010 kg. That gas will be expanded in a turbine. So very small amount of fuel will be added over here. So that's what majorly while telling we will say like it is making use of only air, which is large quantity of 1 kg, and then will be sent to the atmosphere. Okay, so it is called as open cycle with the meaning that air will be taken from the atmosphere, and then the same air, I mean now I'm calling it as an air or gas, whatever it is. So that air will be once again sent to the atmosphere back. So this is called as an open cycle. So take the air from atmosphere, send it to the atmosphere, send the gas to the atmosphere. No need to reuse it. And then if at all it is to be reused, then it is called as a closed cycle. That's it. Okay. So now we will have a look on this closed cycle gas turbine. In this closed cycle gas turbine, so as I told you, so air will be taken in a compressor, it will be compressed and then sent to the combustion chamber here. Okay, then turbine, and then instead of sending this to the atmosphere, that will be reused in a compressor via some arrangements. So that is called as a pre-cooler over here. It is called as an intercooler. In case of this gas turbine, it is called as an intercooler. I mean cooling of this gas. Yeah, intercooler, generally they will use this term in between two compressors, but then it is between a compressor and turbine. So you may call it as a simple cooler, or it is a pre-cooler before sending to the compressor. Okay. So फिर ये cooler में क्या किया जाता है? So whatever the gas which is coming out of this turbine, instead of sending to the atmosphere, that will be cooled by sending the water. Okay, that will be cooled by sending the water into it, and then this water will be coming out. So this water which is entering into this pre-cooler is going to cool the gas. So to its normal original temperature, like the atmospheric air. So once again, this gas now it is a gas now, because it is having already air from atmosphere and some amount of the fuel. So this gas which is pre-cooled over here will be sent back to the compressor. Then once again the same process. Okay, compression, then combustion chamber heat exchanger. I'll tell you this part which is called as a regenerator. I mean making use of available exhaust gases. Then air supply, the secondary air supply part over here. These combustible gases, मतलब जो extra है वो waste पे चले जाते हैं. Generally waste नहीं करना चाहिए. Whatever the gas which we are producing here will be sent to the turbine. So these are major two types. One is open type and second one is closed type. तो फिर इसमें से प्रॉब्लम आपको ये रहेंगी कि सर इसमें से कौन सा डील करना है, तो डील एक ही करना है, वो ओपन साइकिल गैस टर्बाइन. ओके, सो टेक आउट द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड सेंड इट टू द एटमॉस्फेयर. दैट्स इट. Now this gas cycle is I mean gas power plant is making use of this Brayton cycle. Okay, as an analysis we will have a look on this one. We will be having four type of a processes. Let me tell you, that is with the diagram, if I'm able to have that one. Yeah, just have a look on this one. Compression, as we discussed, compression will be there, and that process we will show you this TS diagram later on. So one will be the compression. There in a compression we will be having a isentropic compression. So what is the meaning of isentropic compression? The compression is going to be having a entropy constant. So what is the meaning of keeping entropy constant? We can say that the process is reversible, and we can say that the process is having a adiabatic process. I mean, once again, the question arises, what is the meaning of adiabatic? Adiabatic in the sense, rate of heat exchange will be zero. Q will be equal to zero, no heat exchange. So that is adiabatic. So then what is reversible? Yes, you can have that process in a reversible manner. If it is totally reversible and adiabatic, so then you can say the process is isentropic. So in a compression, we are having isentropic compression of the air. But एंट्रोपी मतलब ये आइसेंट्रोपिक बताने के लिए ऐसा होता है कि you should have the movement of the air in the compressor very fast. Otherwise, I would like to say there should not be any friction between the compressor and the air what we are taking into the compressor.
वो पॉसिबल नहीं है, फ्रिक्शन तो रहेंगे, बिकॉज you come across with the air, you are taking the air inside the compressor, then you do have piston and cylinder arrangements over there, so you are going to compress that air in the compressor. So obviously there will be friction part between air and mechanical parts, pistons, but still, I mean, you are not able to avoid any friction in the compressor. Even in turbine also you are not able to avoid any friction. So though we do say isentropic, but the analysis, this is only for the simplification purpose, I mean only for the simplification of the analysis, we will call it as an isentropic compression. Otherwise I would like to say, in reality, in ideal condition, in actual condition, this compression will be non isentropic, मतलब फ्रिक्शन होता है. आइसेंट्रोपिक कब आप लोग बोल सकते हैं क्लियरली, कि बिल्कुल जब फ्रिक्शन नहीं रहेंगे. तो मैं बोलता हूँ कि जब फ्रिक्शन नहीं रहेंगे तो हीट एडिशन नहीं रहेंगे तो अडियाबैटिक हो जाएंगे, राइट. तो अडियाबैटिक और रिवर्सिबल होने के लिए, अडियाबैटिक होने के लिए हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए. हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए इन द सेंस बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन विल इंड्यूस द हीट. तो फ्रिक्शन नहीं रहेंगे तो हो सकता है, बट बिल्कुल ये मैकेनिकल एलिमेंट है, फ्रिक्शन नहीं होगा इसका गारंटी नहीं है. So but only for the analysis we should say it is an isentropic compression. Then comes combustion chamber, उधर हम लोगों ने constant pressure पे heat add करते हैं. Then comes expansion in a turbine, it will be isentropic expansion. फिर वापस heat rejection जो है वो constant pressure. ओके, ऐसे 4 प्रोसेस आता है ब्रेटन साइकिल के लिए या जूल साइकिल के लिए, जो हम लोगों ने देख रहे थे वो पार्ट में. ओके, तो फिर उसमें बाकी सारे चेंजेस जो है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो भी पार्ट है हम लोगों ने वो नेग्लेक्ट करते हैं. ओके, दिस स्मॉल आई बोल के हम लोगों ने कंसिडर करते हैं. and then we will apply this SFEE, that is steady flow energy equation, and then every analysis will be used for used in the thermodynamic cycle or in mechanical engineering, it will be based on 1 kg mass, okay, for unit mass. तो फिर अगर वही हम लोगों ने अगर कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ ए स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर, ओके, तो पहले वो डायग्राम दिखा देता हूँ एंड देन वी विल कम टू दिस पार्ट. Yeah, this is a TS diagram of a gas turbine power plant. Now look here, 1 to 2 is, excuse me, I'm sorry. Yeah, hope I'm audible now. Look here, this temperature and entropy diagram is for, you know, both you can take together, like this is for open as well as closed. But anyhow, इधर मैंने टाइटल में लिखा है कि क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन के लिए ये टीएस डायग्राम है. ओके, पीवी का भी ले सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं. जो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे ये बेसिस पे करेंगे. इसके लिए आई वुड लाइक टू टेल यू. Now look here, point number 1 is entry of air into the compressor. So 1 to 2 is isentropic compression, that is vertical line, keeping your entropy constant. Yes, okay, 1 to 2 is isentropic. ये हो गया आइडियल. एक्चुअल कैसे रहता है कि नॉन आइसेंट्रोपिक, किसी के लिए एंट्रोपी जो है ना कांस्टेंट नहीं रहेंगे, एंड पे थोड़ा सा इंक्रीज होता है. दैट्स व्हाट 2 डैश विल बी द इंक्रीमेंट इन एंट्रोपी. सो 1 to 2 डैश मतलब ये जो डॉटेड लाइन है, इट इज एक्चुअल कंप्रेशन, और 1 to 2 जो है वो आइडियल कंप्रेशन. मतलब ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और ये एक्चुअल कंप्रेशन. इससे आप लोग शायद एफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्या? तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेंगे कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन वर्क मतलब 1 to 2 divided by actual compression work is going to give you the efficiency of this compressor. नहीं तो मैंने सिंपल एक थंब रूल बोलता हूं कि हमेशा एफिशिएंसी लेस देन 1 रहता है ना. अगर आप लोगों ने इधर देख लिया है कि T2 और T1 ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस और T2 डैश और T1 का डिफरेंस अगर आप लोगों ने टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं तो आपको पता चलेगी कि कौन सा बड़ा है इसमें. T2 माइनस T1 का डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और T2 डैश और T1 ये दोनों में से बड़ा कौन सा रहेंगे मुझे बताओ.
कौन सा डिफरेंस ज्यादा रहेंगे? I'll repeat. T2 minus T1 is one temperature difference और T2 dash minus T1 this is another temperature difference. इसमें से बड़ा कौन सा रहेंगे, ज्यादा वैल्यू कौन सा रहेंगे? T2 dash minus एग्जैक्टली T1. T2 डैश माइनस T1, वो जो ज्यादा वैल्यू है ना वो डिनोमिनेटर में रखो, ऑब्वियसली आपका एफिशिएंसी कम मिल जाएंगे. मतलब दिस इज ट्रू फॉर बोथ कंप्रेसर का एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए और टरबाइन का भी एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए आगे जाके. तो फिर आप लोग बोल सकते कि यस सर कि हम लोगों ने ये 122 डैश से एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, ये पहला वाला कंप्रेसर है, फर्स्ट कंप्रेसर, तो निकाल सकते हैं. इसमें मैंने क्या बताया, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 डैश माइनस T1, क्योंकि T2 डैश माइनस T1 डेल्टा T ज्यादा है तो इसी के लिए आपका एफिशिएंसी कम मिलेंगे एंड दैट इज ऑब्वियस. तो मैथमेटिकली या थर्मोडायनेमिकली आप लोग कैसे लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ ए कंप्रेसर? You will write like isentropic compression work to the actual compression work, otherwise non-isentropic compression work. कैसे भी ध्यान में रखो, it is up to you, but value of efficiency will be always less than 1. वही सबसे आप लोग ये रेशियो आप खुद लिख सकते हैं डायग्राम देख के. Similarly, now look here, 1 to 2 is one first compressor, फिर 3 to 4 is another compressor. ओके, एरो नहीं दिया इधर. 3 to 4 is another compressor. तो फिर ये 2 to 3 क्या है? इट इज एन इंटरकूलिंग. इसमें से क्या होता है देखो, T2 is higher, temperature at this point number 2 is higher than temperature at this point number 3. So that indicates that कि जो भी पहले कंप्रेसर में हम लोगों ने इंक्रीज किया है जिसका प्रेशर मतलब विल बी रेंजिंग, मतलब इधर 3 प्रेशर लाइन है, ये जो लाइंस दिख रहे हैं ना सब कि पॉइंट नंबर 1, 10, 9, 9 डैश, this is one pressure, this is atmospheric pressure. Let us say P1 is the atmospheric pressure because we said we are taking the air from the atmosphere, so this is atmospheric pressure. तो फिर हम लोग ने आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करते हैं तो इंटरमीडिएट प्रेशर पे लेके जाते हैं, लेट अस कॉल इट एज एन Px, इंटरमीडिएट प्रेशर. तो इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इट इज सिंपली अंडर रूट ऑफ P1 एंड P2. अभी फिलहाल बता रहा हूं मैं आपको. तो ये Px इंटरमीडिएट प्रेशर तक हम लोग ने पहला कंप्रेसर में करते हैं. और इधर क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ओके, बट देन प्रेशर इज आल्सो इंक्रीज्ड. सो कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट we will reduce its temperature from T2 to T3, so that will be done in a intercooler. This is another element between the compressor, intercooler बोलते हैं इसको. ओके, फिर 3 to 4 second compressor, then 4 to 5 जो है ना, it is called as a regenerator. मतलब it is nothing but making use of the exhaust gas temperature for heating the air. ये 4 to 5. देन 5 to 6 जो है ये कंबशन चेंबर है. 5 to 6 इज ए कंबशन चेंबर वेयर वी विल ऐड द फ्यूल. इधर फ्यूल ऐड करते हैं, सम 10 ग्राम जो भी 5 ग्राम जो भी रहेंगे फ्यूल इधर ऐड करते हैं एयर के साथ. एंड देन 6 to 7 इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इन ए टर्बाइन. मतलब ये पहला वाला टर्बाइन जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाई प्रेशर टर्बाइन. वाई हाई? P2 इज हायर देन Px एंड Px इज हायर देन P1. तो 6 to 7 is isentropic work of a gas in a turbine. Then what is 6 to 7 dash? It is actual work done in a turbine. Now with this distance T6 और T7 का एक डेटा है टेम्परेचर डिफरेंस, T6 minus T7 और T6 minus T7 dash एक टेम्परेचर डिफरेंस है. तो ये दोनों यूज करके कैन यू एबल टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ए टर्बाइन? जैसा मैं अभी सिंपल एक फंडामेंटल मैंने बताया था कि जो बड़ा वैल्यू रहेंगे वो डिनोमिनेटर में रखो डिफरेंस, तो फिर ऑब्वियसली आपका एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन भी लेस देन 1 मिलता है, क्योंकि कौन सा भी एलिमेंट का मोर देन 100% कौन सा भी एलिमेंट का नहीं मिलता है मैकेनिकल में. कैन यू एबल टू टेल मी कि मुझे डिनोमिनेटर में कौन सा वैल्यू रखना है? 1 is T6 minus T7, ये टर्बाइन है, हाई प्रेशर टर्बाइन. और सेकेंड वन इज T6 minus T7 डैश, ये टेम्परेचर डिफरेंस और ये टेम्परेचर डिफरेंस. डिनोमिनेटर में मुझे कौन सा रखना है ये बताओ? T6 minus T7 dash. एग्जैक्टली, क्योंकि दिस इज हायर टेम्परेचर डिफरेंस, राइट? तो T6 minus T7 जो है ना डिनोमिनेटर पर रखेंगे. तो फिर हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द एफिशिएंसी ऑफ दिस टर्बाइन? आई वुड लाइक टू से कि एक्चुअल वर्क डन इन ए टर्बाइन, क्योंकि 6-7 डैश आप लोगों ने न्यूमरेटर में रख रहे हैं, एंड दिस इज एक्चुअल वर्क, डॉटेड लाइन है एक्चुअल वर्क है.
Actual work done by the gas in a turbine है actual turbine work divided by isentropic turbine work. Actual by isentropic, इधर compressor के लिए isentropic divided by actual. Okay, hope ये हिसाब से आप लोग ध्यान में रखेंगे. And he is right obviously. So to calculate the efficiency of this turbine, we will take T6 minus T7 dash divided by T6 minus T7 because this is higher. ओके तो फिर उसके बाद में 8 to 9 इज वन मोर टर्बाइन जिसको हम लोग बोलते हैं कि लो प्रेशर टर्बाइन, क्योंकि 6 to 7 इज हाई प्रेशर टर्बाइन विच इज ऑपरेटिंग फ्रॉम द हाई प्रेशर P2 टिल द इंटरमीडिएट प्रेशर PX. ओके फिर बाद में कीपिंग द प्रेशर सेम सेकेंड टर्बाइन आता है कि इट विल इज ऑपरेटिंग फ्रॉम द इंटरमीडिएट प्रेशर PX टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1. सो दिस इज कॉल्ड एज द लो प्रेशर टर्बाइन. आप लोग अगर और भी लेना चाहते तो और भी रख सकते टर्बाइन इधर. ओके P2 टू वन और वन प्रेशर एक टर्बाइन, फिर उधर से इंटरमीडिएट तक दूसरा, फिर इधर से और एक तीसरा. सो यू कैन मेक यूज ऑफ n नंबर ऑफ टर्बाइन, सिमिलरली n नंबर ऑफ कंप्रेसर. बट ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस जो होता है ना दो ही के साथ होता है, दो कंप्रेसर और दो टर्बाइन बहुत हो गया. ओके एंड देन व्हाट इज बिटवीन 7 and 8? कैन एनीबडी टेल मी 7 and 8 क्या रहेंगे? कांस्टेंट प्रेशर पे कुछ चल रहा है इधर. दिस इज कांस्टेंट प्रेशर लाइन. 7 to 8 what is this? Can anyone tell me? This one I told you 2 to 3, otherwise 2 to 3 is intercooling of a air. 4 to 5 is making utilization of a hot exhaust gases for heating the air. Okay, 5 to 6 is combustion chamber. Then 6 to 7 is high pressure boiler, high pressure turbine. Then 8 to 9 is low pressure turbine. What about the 7 to 8? Can anyone tell me? क्या कर रहे हैं इधर हम लोग? टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? देखो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट. 7 to 8 का प्रेशर कांस्टेंट मतलब 3 to 2 dash 7 7 dash 8 ऑलमोस्ट प्रेशर सेम रहते हैं. नॉट नेसेसरीली, हो सकता है कि 3 to 2 dash का एक प्रेशर और 7 7 dash 8 का एक प्रेशर थोड़ा सा कम ज्यादा रहेंगे. बट कैन एनीवन टेल मी व्हाट दिस प्रोसेस इज? 7 to 8 at constant pressure, what we are doing? We are increasing the temperature from T7 to T8. Can anyone tell me what this is called as? एक मैंने आपको बताया कि इधर इंटरकूलिंग, दूसरा रीजनरेशन. This is one more term. Yes, Reheating. एग्जैक्टली रीहीटिंग. रीहीटिंग नाम ही बता रहा है कि हम लोग हीट करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर और बढ़ाते हैं. T7 से लेके T8 तक टेम्परेचर बढ़ाते हैं. दिस इज रीहीटिंग. मतलब ये डायग्राम अगर आप लोग देख लेंगे ना तो दिस इज यूनिवर्सल डायग्राम में आपको बोलते हैं गैस टर्बाइन में. सिंगल डील करने से अच्छा दो कंप्रेसर, दो टर्बाइन, रीजनरेटर, इंटरकूलर और रीहीटिंग सब टोटल. इसी के लिए मैंने ये डायग्राम बाद में रखा था. बट देन प्रोसेस ऐसा होता है कि ये कंप्रेसर और ये टर्बाइन वर्क, ओके, और ये हीट एडिशन इधर. नाउ लुक हियर, अगर इसका एफिशिएंसी हमको कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या ऐसे कैलकुलेट करेंगे? नेटवर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, ऐसे कैलकुलेट करेंगे. नेटवर्क मैंने आपको बताऊंगा कि इट विल बी, नेटवर्क इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द टर्बाइन वर्क एंड कंप्रेसर वर्क डिफरेंस. और जनरली टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क लेते. नहीं तो दूसरा टर्म में अगर बताना है तो हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, इधर हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, ऐसा भी कर सकते हैं. मतलब बेस्ड ऑन द वर्क एंड बेस्ड ऑन द हीट, दोनों भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. बट हियर इट इज बेटर, पावर प्रोड्यूसिंग के लिए हमेशा इट इज बेटर टू डील विथ हीट पार्ट, मतलब आइदर Cp into डेल्टा T और एंथैल्पी. ओके, दोनों में से कर सकते हैं. अभी चलो फिलहाल इधर टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग देखेंगे नेटवर्क डन इन ए टर्बाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे. इधर एक Cp रहेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ द एयर एक रहेंगे इधर पॉइंट नंबर 1 पे. तो फिर पॉइंट नंबर 2 पे एयर है, फिर पॉइंट नंबर 3 and 4 पे भी एयर है, पॉइंट नंबर 5 पे भी एयर है, और इधर 5 to 6 के बीच में हम लोग ने कुछ फ्यूल ऐड करेंगे. सो नाउ आई वुड लाइक टू से Cp ऑफ द गैस विल कम इनटू द पिक्चर ओवर हियर. मतलब Cp ऑफ द एयर एंड हियर Cp ऑफ द गैस. ओके, स्पेसिफिक हीट. So can you able to tell me with respect to the Cp of the gas and temperature difference as a work done network कैसे कैलकुलेट करेंगे?
और 1 kg समझो, mcp डेल्टा टी के फॉर्म पे लेना है। m इज 1 kg, cp मैंने आपको बताया कि cp ऑफ ए गैस, ओनली डेल्टा टी लेना है टर्बाइन वर्क के लिए। कैसे लिखेंगे टर्बाइन वर्क का? यस I hope screen is not shared, right? Yes, sir. Screen is not showing. Manita. ओके, मीनवाइल कैन यू टेल मी, उधर कुछ 6 और 7 पॉइंट था, तो टर्बाइन और कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो मैं एक एक मैं बताऊंगा। हाई प्रेशर टर्बाइन में, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। I think last my collection over here. Just a minute. Hope I'm audible, right? Yes, audible, sir. Just a minute. Sir, sir, what is it? वायर देखिए, वायर इंटरनेट, इंटरनेट का वायर थोड़ा सा लगाइए लैब का। हाँ, नहीं वो शायद आपके पैर के नीचे एक वायर आता है, अगर उसको हिला दिया तो इधर जा रहा है कनेक्शन। नहीं, पैर अगर लग गया ना, पता नहीं। एक मिनट। हाँ, जस्ट 1 or 2 minutes। ओके, जस्ट मिनट। मीनवाइल आपको एक काम करता हूँ, लिंक देता हूँ मैं, आप लोग तब तक भरो, मैं देखता हूँ जैसे।
किरण, 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 ते दादा ते जीवनशैली आहेत ना, त्यांना बोलव बरं. एक मिनिट हा. एक मैसेज मैंने टाइप करके भेजता हूँ, उसमें पहले फिलहाल अटेंडेंस भरो, तब तक मैं बुलाता हूँ. और एक मैंने लिंक भेजा है फीडबैक के लिए, अभी फिलहाल भरो एंड जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, जस्ट 1 or 2 minutes. और मुझे ये भी कंफर्म करो कि वो ओपन हो रहा है कि शीट नहीं. ओपन हो रहा है क्या? नो सर. नहीं हो रहा है. एक ही मिनट. क्या प्रॉब्लम है? फॉर्म्स डॉट GLST5. एक ही मिनट. मेरा मोबाइल का नेटवर्क से देखता हूँ, रुको.
देखो अभी और एक बार। HTTPS. एक मिनट, एक एक उसमें से एक एक गलत हुआ है। जस्ट जस्ट 2 मिनट्स। वी WXOU 2AUST। एक ही मिनट, एक ही मिनट, एक ही मिनट।